Let me go across to Prakash Javadekar, who joins us at this stage. Prakash ji, thanks very much for being with us. End of the day now, as these trends become results, of course, the Election Commission will need to declare that. Be honest with us, Prakash ji, these results at the end of the day, did you expect Madhya Pradesh, Chhattisgarh to be, and Rajasthan to be at this level of a victory for the BJP, or did you actually say smaller numbers? Yes, because we have seen the pulse of the people, that people want stability, prosperity, and positivity. They don't want negative politics and gali-galoch politics. So they have decided they want progress. And therefore, they believe in Modi. They trust Modi because he delivers. He doesn't discriminate. And he has become a symbol of progress and stature of India. Therefore, common man who doesn't read everyday political news, the common man who doesn't hear the political debates, he decides how to vote, why to vote, whom to vote with his robust common sense. And that is really capital of Modi, because they trust him. गरीब लोग समझते हैं कि वो हमारे में से है. जी, प्रकाश जी, understands our pains. जी. So that is how things are moving. And let me just share with this. I was in charge of Telangana. The good news for us is the present Chief Minister and probable Chief Minister of Congress, Revant Reddy and K.C. Rao, our candidate Venkat Ramana Reddy has defeated both of them. Yes, right. In Kamareddy. राइट. प्रकाश जी, आपको बधाई, और आज बिल्कुल बीजेपी की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने का वक्त है, लेकिन एक डेटा पॉइंट की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं. और कांग्रेस के लिए, दरअसल कांग्रेस के लिए ट्रेजेडी का डे है, क्योंकि कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ 0.4% गिरा है छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में 0.6% बढ़ा है, एक जगह मध्य प्रदेश में करीब सेम है, 40% के आसपास. कांग्रेस का वोट परसेंट इंटैक्ट है. हमारी चुनाव प्रणाली ऐसी है कि आपको बहुत जबरदस्त विक्ट्री मिली है बीजेपी को, लेकिन जो हम कह रहे हैं कि कांग्रेस अपना सेल्फ गोल करना जानती है, उसको नैरेटिव नहीं समझ में आता, बावजूद उसके कांग्रेस का वोट शेयर इंटैक्ट है. इसको भी हमको इनकार नहीं करना चाहिए. मैं बताता हूं, कर्नाटक के अगर आप याद करोगे पिछले साल के चुनाव की, तो कर्नाटक में भी हमारे वोट वैसे ही रहे, जेडीएस के कम हुए और वो कांग्रेस को बढ़े, इसलिए रिजल्ट आया. अच्छा, केरल में हमेशा देखते हैं 1-1.5% के वोट के फिगर से डीएमके एडीएमके में भी कितना बहुत फर्क होता था, नहीं होता था. तो ये अनेक राज्यों में ऐसी स्थिति है. बट दैट लास्ट 1% becomes very important and decisive, because it is not about spread but even concentration in certain areas where you draw more votes. आपको ज्यादा वोट मिलता है तभी आप जीत के आते हो, और जो पद्धति है वो सबके लिए समान है, कोई बीजेपी के लिए अलग तरीका नहीं है. तो ये अपने डेमोक्रेसी का मैं बुराई नहीं मानता, ये अच्छा ही है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो चुन के आएगा. राइट. Prakash ji, I just wanted to ask you about a couple of points that the Prime Minister spoke about. Please. He spoke about Nari Shakti first and foremost. He spoke about 4 groups, but he spoke about women and women's development. And he guaranteed personally the guarantees which the BJP has made. Going forward, is this going to be a core group? And it is huge in our country that the BJP will be focusing on. Yes, because as I was, मैं जो बता रहा था कि मोदी किसी में भेदभाव नहीं करता. मैंने केरल में देखा है, मैंने तेलंगाना में देखा है, मैंने अनेक राज्यों में देखा है कि जहां राज करने वाले अपने कार्यकर्ता या अपने वोटर को बेनिफिट देते हैं, दूसरे को नहीं देते हैं. मोदी ऐसा नहीं करते हैं. मोदी हर एक को बेनिफिट देते हैं जो बेनिफिट के लिए एलिजिबल है. तो ये एक ही डजंट डिस्क्रिमिनेट, सबका साथ सबका विकास, ये लोगों को पता है. इसलिए मेरे पास हजारों वीडियो केरल में हमारे कार्यकर्ताओं ने तैयार किए, लिए लोगों के टेस्टिमोनियल्स कि मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बाकी सब हो,
लोग भर भर के मोदी की प्रशंसा करते हैं कि ये पहली दफा हम अनुभव कर रहे हैं कि जो योजना घोषित हुई उसका फायदा हमें पूरा मिल रहा है. You know, there was one wonderful quote, Prakash ji, which he said, which I translated. He said, as far as the BJP is concerned, when the strength of women becomes someone's Suraksha Kavach, nothing can harm them. The Suraksha Kavach provided by the woman voter in these elections sort of defined so much for the BJP. Yeah, but it is not about just a vote. We don't consider women and we don't see to any bloc as a voting bloc. We see them as partners in progress. Right. And because women's power we are seeing, now this new program called Namo Drone Didi is a very innovative program. 12,000 women self-help groups have given training. There are trained women agriculturists who can run and monitor and manage the drone and ensure the fertilizer and pesticide spray in the fields. So this is एक सवाल आपसे, आपके स्टेट पर, आप महाराष्ट्र से आते हैं, मध्य प्रदेश की इस जीत का महाराष्ट्र पे क्या असर होगा? हमारे यहाँ तो अभी ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, वो लगभग जनरल चुनाव जैसा ही होता है और वहां बहुत भारी बहुमत से हमारा गठबंधन जीता है जी. और इसलिए अब वो शरद पवार, उद्धव ठाकरे और ये गठबंधन का कोई और कांग्रेस कोई अता पता नहीं है. तो हम चुनाव जीत रहे हैं हमारी ताकत पर, हमारे कार्यक्रम पर, और मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्यों का परिणाम होता ही है. लेकिन मैं आपको बताता हूं, एवरी स्टेट इज अ डिफरेंट यूनिट. पीपल देयर थिंक डिफरेंटली एंड पीपल वोट डिफरेंटली फॉर डिफरेंट इलेक्शंस. इसलिए मैं कहता हूं कि तेलंगाना में हमें आज भले 8 एमएलए सीट मिली है, विधायक की सीट 8 ही मिली है, लेकिन अभी आने वाले पार्लियामेंट चुनाव में हमें 10 पार्लियामेंट के सीट हम जीतेंगे. ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने देखा है 3 महीने रहकर जो देखा है, वो जनता कहती है मोदी को वोट असेंबली पार्लियामेंट में. तो ये जो है, ये एक बहुत बड़ी ताकत है. जैसे आपने प्रकाश जी तेलंगाना के बारे में बिल्कुल नंबर दे दिया, तेलंगाना के लिए 10 सीट बीजेपी के लिए, महाराष्ट्र का नंबर दे दीजिए, या मैं आपको प्रोवोक कर दूं कि 24 के ऊपर नहीं है आपके गठबंधन का. नहीं, ये जो है वो गलत है. मैंने बताया ना, अभी जो जिस तरह से, मैं आपको आज बताता हूं कि हमारा बेस टोटल 42 था, उससे एक हाथ अधिक होगा, कम नहीं होगा जी. You know, Prakash ji, one interesting point that the Prime Minister spoke about, he spoke about it at length, was the role of the Adivasi community. He said that the Adivasi community has not progressed for decades because of the policies of the Congress. In Jharkhand, on the 15th of November, there's a 24,000 crore rupee scheme that the BJP announced, and the sense was that this might have an impact in Madhya Pradesh, Rajasthan, and Chhattisgarh as well. But if you actually look at voting took place prior in one phase in Chhattisgarh to this scheme having been announced. So the point is, the BJP actually pegged away at this particular group, the Adivasi community, well before this one announcement. So it's not enough for one person to say, Modi announced this particular scheme and that is why they won. In fact, you've got this group because of a year of work. That is not the reality. People have faith in Modi's leadership. They want progress and positivity. They don't want negativity, and therefore they are voting us. They are not voting for schemes. People prefer, और उन्होंने आज जैसे कहा कि दल से देश बड़ा है, यही हमारी धारणा है, काम का आधार है. और इसीलिए people also think very wisely. Nani Palkhiwala used to say, illiterate intelligence in our country is many times more effective than educated incapacity. All right. Prakash ji, thank you so much and congratulations for this victory. Let me